Hello guys, आज I will wash both of my cars. I wanted to make this video for a long time and finally I got some free time कि मैं record भी कर पाऊँ और गाड़ी भी धो पाऊँ. So I'll be using this graphene shampoo by Wavex. This is the foam cannon that I'm going to use. This is my pressure washer, which is pretty good. So this is my pressure washer setup. This is my pressure washer. This is the pipe that is coming from my home, the wire. This is the water inlet pipe. Let's first do the wheels. To get better wheel cleaning accessories and tools. इसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्लोथ से करने में, so I will get the necessary tools soon. अच्छे से घिसना पड़ेगा, इसमें बहुत ब्रेक डस्ट होगा. Now it's time for foam wash number 1. This is the pre-wash. That is on the surface of the car. अगर हम बिना प्री वॉश के गाड़ी पे पोंछा मारते हैं with the microfiber, तो it is not good for the paint since it scratches down to the paint जो ऊपर का डस्ट है. तो what this pre-wash does is it takes down any of the loose dust on the car and cleans the car like it says pre-wash. तो वॉश से पहले इट हेल्प्स क्लीन द कार कि जितना बेस लेवल डर्ट होगा वो उड़ जाएगा. उसके बाद जितना भी डीप डर्ट होगा दैट विल बी डन इन द सेकेंड राउंड. लेट इट सिट डाउन फॉर अ मिनट एंड देन विल वॉश इट ऑफ. लुक्स ब्यूटिफुल. लेट्स रिंस दिस ऑफ.
get a round 2 of foam. मैं पर्सनली ऑलवेज सारे ग्लास सर्फेसेस से स्टार्ट करता हूँ. द मेन वन बीइंग जहाँ से ऑब्वियसली द ड्राइवर मैं जहाँ से देखता हूँ. तो दिस हैज़ टू बी द क्लीनेस्ट ऑफ एवरीथिंग. अब पहुंचने की बारी. दिस इज द बेस्ट टावल. थोड़ा और बड़ा वाला लेना चाहिए था मेरे को, बट इट वर्क्स. जस्ट वाइप द वाटर ऑफ. एक ड्रैग.
रिकॉर्डिंग कैमरा का बैटरी ख़त्म हो गया. दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट टुडे.